So the weak forces, अच्छा मैंने बड़े जल्दी में ये चीजें थोड़ी सी लाइन ऊपर लिखी है, बट आई थिंक ये चीजें आपको पता है कि ये 4 ही हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इस पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड, और यू कैन से कि सर ये वाला फोर्स भी हमने पढ़ा है और ये किस कैटेगरी में आएगा या कहाँ आएगा, यू कैन आस्क मी. वी एग्री दैट दीज आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेस. इस पे हम एग्री करते हैं. यस सर. ओके. एंड इसी के कैरेक्टरिस्टिक हमें नोट डाउन करने हैं इस टेबल में. तो टेबल के फॉर्म में ये. सो फर्स्ट, gravitation, which is being carried by gravitons. Weak forces, which is you know the example, that is beta decay. Positron decay हो, beta decay हो, दोनों या फिर electron capture है. So all these three, which is actually concerned with the weak interaction, they are very slow interaction. They take certain time, or you know that time is around 10 to the minus 16 or minus 18 seconds. That is not very slow, but respect to other field, that is slow. Then electromagnetic interaction, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी वन प्रोटॉन एंड अनदर इलेक्ट्रॉन, they are talking to each other, they have certain interaction, and that interaction can be conveyed only by the field particle. That field particle you already know, that is photons. So photons तो आपके पास बड़ा फेमस है, h nu उसका एनर्जी होता है, that you already know, and there are so many photons, so many, but all are photons only. And strong forces are not carried by mesons. स्टार्टिंग में हमने पाई मेसॉन एग्जांपल लिया था कि पाई इज बीइंग कैरिड, पायॉन्स आर बीइंग thrown from one proton to the other proton, they have the interaction. So that is something like a composite system. Proton भी एक composite system है और pions भी एक composite system. But at the very basic level, actually the quark within the proton and the quark within the other proton, they are exchanging something. So they are exchanging something to within themselves. तो 3 क्वार्क आपके एक प्रोटॉन में है, दूसरे के पास भी 3 क्वार्क है, उन तीनों में से कोई भी एक क्वार्क, it can exchange something to the other quark of the other proton. So that the particle which is being exchanged is called gluons. Gluon is very common name for any adhesive kind of thing. So very adhesive, very very strong. ये फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, that is why its name is gluons. तो सारे फैंसी नेम है, कोई ऐसा अनयूजुअल नेम नहीं है. W and Z are depending कि वो जिसने डिस्कवर किया उसके नाम पे वो विनबर्ग था, so that is why W is there. And their strength, if you call it as a strength, how much strength is, and these strength we are talking only at a certain distance scale and energy scale. ये भी ध्यान रखना. These strength, जो भी मैं strength लिखूंगा कि कौन सा strength किसका strength की value क्या है in comparison to each other. For example, if I write this as 1, the strength is 1, then this will have certainly around 25 times stronger than gravitation. So weak interaction is 10 to the power of 25 times stronger than gravitation. And electromagnetic interaction is 10 to the power of 36. Sometimes किसी book में आपको 38 भी लिखा मिल जाएगा. So that is also 38, 36 के around का variation है. कई बार लिखा रहता है 38, but in this book it is written 10 to the power 36. So we will follow this. So in respect to gravitation, electromagnetic interaction will be around this much stronger than your gravitation. And then you come to the strong forces, and this is, if you write this as 36, then this will be 10 to the power of 38, or if you write 38, then this will be 10 to the power of 40. तो ये इस order में vary करता है, which is the strongest one. So you can compare this, how weak this gravitation is. Very weak force, very weak, but whole of the universe is governed by this only. Universe का पूरा structure, why sun is a spherical system, why it is not cubic, why it is not cylindrical system, why it is not different kind of shape, why it is not conical, that is being given by this one. No one is deciding the shape of the universe, only this one is deciding. The whole of the universe, how this universe is and how the things are arranged in the universe, that is decided by, which is the weakest force in the nature. तो ये भी बड़ा यूनिक है. गॉड ऑलवेज गिव लेस पावर, बट लेस पावर के साथ वो और बाकी चीजें भी दे देता है. तो उसने काफी इंपॉर्टेंस दिया ग्रेविटेशन को, इवन दो द पावर इज वेरी स्मॉल.
और जिसको ज्यादा पावर दिया है उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है. इफ यू जनरली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस डजंट अफेक्ट अस एट ऑल. हाँ, you can say कि all the things are made up of, because if you don't have a nucleus you cannot have the elements. So this has also a use, but you don't see any direct evidence कि आपको ये कोई effect करता है ये strong forces या gluons. या they are always being exchanged in your body also. आपके body में exchange हो रहे हैं, but you don't have any effect. But yes, this always have effect, even though that is the weakest one. Then this is strength, you can say. You can say relative strength. Then range. Up to what range they are active, or up to what range you can feel that particular interaction. This is what range means. And in meters, we can write that also. This has infinite. If two masses are situated at the end of the universe, still they have gravitational interaction. Even though that is very weak, maybe negligible and maybe zero, but still they can feel each other. So this is the range of the gravitation. Even the electromagnetic also have the range of infinity. They also can have the interaction up to infinity. Means they don't have any particular range ki iske baad wo hoga hi nahi. So it can, they both are having an infinity range. And this one is 10 to the power of minus 18, very small scale. It is in sub-nuclei system only. Even this is also minus 15. This we have already seen कि 1 Fermi के around ही हमारा strong forces active रहता है. If the nucleon go away from that distance around 1.5 Fermi, they don't interact. So strong forces का कोई role नहीं रहता है. So these are very small. This is within the nucleus, and this is within the nucleon. This is within the nucleus. This is within the nucleon. यानी proton के अंदर के interaction, neutron के अंदर के interaction. So this is very small. Because if you see the size of proton का size जो है, that is around 0.8 Fermi. So it is minus 16. So minus 16, minus 18. So within the proton only the things is happening. So this is even nucleus can be, it would be wrong. It is sub-nucleon kind of interaction. Okay. Then how the interaction means, how these things are proportional to the distance. हमने ये meters में हमने वो तो लिख दिया कि range क्या है, but how the things is proportional to the distance. So this is 1 upon r square, very famous. कोई दिक्कत नहीं, ये भी 1 upon r square का field है, because r cube r5 के field भी हैं, but they decay very fast. तो जो existing field है from one point to other point, so that is 1 upon r square and 1 upon r. The function है, this function is this one, and this is proportional to, directly proportional to r. You remember this thing that when you go very close, the strong forces become repulsive. If you go away, that become attractive. तो आपको दूर जाना पड़ेगा for the feeling of strong forces. If you come very close, if you bring two quark or two nucleon very close to each other, then they will start repelling each other. It means as you move away, that is proportional to r. Okay, so this force is something have a exponential minus mr divided by r. So this is having a complicated kind of variation. So that is here, and acts on किस पे work करते हैं, what kind of means these particular forces or these field quanta acts upon what kind of thing. Means they interact due to charges or due to masses or due to energy or due to any other spin parameter or due to any other thing. We will write just acts on what kind of thing. So they will act on mass and energy. They acts on flavor. Flavor किसका? क्वार्क का फ्लेवर. आपके प्रोटॉन को जब वीक फील्ड आपका इंटरेक्ट करता है या वीक फील्ड एग्जिस्ट करता है किसी विद इन द प्रोटॉन और विद इन द न्यूट्रॉन, the proton become neutron or neutron become proton. It means any one quark has changed its flavor. उसका जो फ्लेवर था ना, अभी फ्लेवर पढ़ेंगे कि क्या है, थोड़ा सा अभी बस अज्यूम कर लो कि देयर इज अ फ्लेवर ऑफ क्वार्क आल्सो. तो और भी फैंसी नेम आएंगे आपके पास. तो दीज आर फैंसी नेम. द नेम्स हैज बीन finished, so that is why the people start writing these kind of name. Even that is very difficult to understand, to remember, so that is why to remember
in an easier way, they write these things. So flavor of quark is changing. Means a proton become neutron or neutron become proton. So something has changed. Any one quark. अब अगर proton का quark देखो तो दो up quark हैं. We have two up quark, one down quark. And neutron, if you see, there are one up quark and two down quark. It means one up quark, if you say कि beta decay हुआ है, or if proton is changing to a neutron, then one up quark has converted into a down quark. So this is a flavor change. This is a flavor change. यानी up quark has been converted into a down quark. दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. There is a difference of charge and there is a difference of some other things, but the flavor has changed. So this actually changed the flavor, and they work on the charges, plus minus charge है, so they work on the charges, electric. And strong forces यानी gluons, gluons का interaction होता है तो क्या change होता है? Anyone know? It acts upon mass, energy, flavor or charge, or what kind of thing? किस पे act करता है ये? क्या change करता है ये? Flavor change करता है, मास चेंज करता है, एनर्जी चेंज करता है, चार्जेस चेंज करता है, या क्या चेंज करता है? एनीवन, एनी गेस? एनर्जी? नो. चार्जेस. कलर चार्ज. चार्ज इज नॉट that plus minus charge, it is a color charge. Charges होते हैं, but that is a color charge. Again, it is a very different kind of name, and why the name is there we will discuss when we will discuss the quark. That charge सिर्फ उसको एक information दे रहा है कि there is a charge on these quark, that you cannot directly relate to this plus minus charges. Electromagnetic charges नहीं है, they are color charge. Color charge is a new quantum number given to the quark. Or in a very simple way I can make you understand कि quark, proton itself is a very small, means its dimension is very small. You can treat that as a point particle. Not exactly, but you can treat for a certain cases. अगर nuclear physics की बात करें तो you can treat that proton as a point particle. So again, the Fermi will come, and Fermi will say, if you treat proton as a point particle, it's okay. But when you say कि proton is made up of certain three more balls, then how you can fit these balls at a single point in a space? That is not possible. I don't allow you. Fermi will say, Pauli will say this thing. So you have to define a new character. आपके पास प्रोटॉन के अंदर दो अप क्वार्क हैं, दोनों अप क्वार्क. डाउन क्वार्क तो चलो डिफरेंट है, उसका चार्ज भी डिफरेंट है, देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस देयर. बट टू अप क्वार्क, they are similar quark, there is no difference between those two, but they are occupying the same space. That space is very small. So you have to define a new quantum number so that the Paulis again prevailed. पॉली एक्सक्लूजन गलत नहीं होना चाहिए कभी भी फर्मियंस के लिए. फर्मियंस कौन से पार्टिकल है जिनका इंटीग्रल स्पिन नहीं होता, हाफ इंटीग्रल हो सकता है, 1/2, 3/2, 5/2. वी डोंट हैव एनी 7/2, बट 5/2 तक है हमारे पास. बट 3/2 का ज्यादा हमारे पास मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं हाफ और 3/2 के. मींस दीज फर्मियंस, दीज क्वार्क आर फर्मियंस, एंड यू कैन नॉट फिट देम एट द सेम पॉइंट. So if you have a two up quark and they both have same, हम तो सिर्फ proton की बात कर रहे हैं, you will have a system where these three quark will be all up quark. So that is not possible to fit in a 0.8 Fermi size. So what we can do, we can define a new character. We can define a new quantum number, and that quantum number will be different for these three up quark, or these two up quark, you can say. So that is a color charge. So we will see what the color means and how we have to write the color for the different quark. Quark तो वही है, but color different होना चाहिए उसका. And we all know कि every matter which we see, proton is a colorless, neutron is a colorless. But within the neutron or within the proton, the quarks are not colorless. They have certain colors. So you have to make the color in such a way that when you bring three quark of a different color, and when you keep them at the same point, they should become colorless. So how we will design that and how the people have designed this thing
कि आपको कैसे कलर चूज करने हैं, और वी ओनली हैव 3 कलर्स एंड 3 एंटी कलर्स। तो 3 कलर्स हैं, 3 एंटी कलर्स हैं। So we will discuss that also in detail in the quark when we'll discuss the quark. Okay. Now the next is the last one, that is affected particle. किस तरह के particle को affect करता है? Means how many kind of particle that is being affected. So all the particle means even the quark also feel the gravitation. So this is for all particles. You don't have any restriction for this. So all particles will follow the gravitation when there is a mass. Even photon has mass. Its rest mass is 0, but when it is in existence, it has certain mass. That is why the black hole able to capture the photon also. अगर photon के पास mass नहीं होता तो black hole नहीं होता. Agree? Yes, sir. Black Yes, sir. hole इसलिए है because photon do not get reflected back. And why photon do not get reflected back? Because they must having the mass. If they don't have mass, they can pass through that. अगर मास नहीं होता तो ग्रेविटेशन वहां पे वर्क ही नहीं करता, और फोटोन हो सकता है रिफ्लेक्ट होके आ जाता, हो सकता है पास होकर के चला जाता। तो ब्लैक होल वुड बी अ डिफरेंट कलर, हमें दिखता हो कोई ना कोई कलर दिखता, मे बी रेडियो वेव्स में होता है या किसी और रेंज में होता, मे नॉट बी एग्जैक्टली इन कलर, मे बी डिफरेंट लैम्डा, बट because the moving photon also have mass. So all the particle in nature, whichever you have discovered or which you are going to discover, they all will follow the gravitation. Gravitation follow करेगा ही करेगा. Maybe उसका strength increase or decrease हो सकता है कि photon is very weak, very feeble mass, so you need a very strong field, gravitational field to capture them. So it is for all the particles. Means gravitation is that gravitation interaction is affecting all the particles. Weak interaction normally it affect left-handed fermions. So left-handed fermions को affect करता है weak field. We will discuss what is left. Maybe we don't require to discuss left-handed fermions. Means something like a spin. If you do apply a magnetic field and when you pass the spin particle, they align or they get means they get deviated from its actual part to a certain direction, and according to that we define the left-handed or right-handed field. And electromagnetic are normally concerned with the charges. तो जहां पे भी चार्जेस है वहां पे इफेक्ट करेगा. These are actually affecting the hadrons. Hadrons are heavy particle. Hadrons का Greek word है, तो hadrons are heavy particle. Heavy particle means like proton or neutron. They are heavy particle. They are actually a heavy particle, and in set of heavy particle, they are the lightest particle. The proton and neutron in the set of heavy particle, they are the lightest heavy particle. So this is the starting step. जो पहला स्टेप है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके बाद जितने भी आगे के जो आपके जनरेशन ऑफ पार्टिकल हैं, दे आर हेवियर देन दैट. So it is also difficult to make heavy particle in nature rather than making a light particle. So that is why hadrons में हमारे पास दो ही जो existence है, जो हमारे पास जिनका decay time बहुत large है. Proton को तो decay time roughly it is infinite, you can say at present. At present we can say that is infinite. But a neutron अगर आपका free neutron है तो it has 10 seconds, 10 minutes. We have already seen that. The neutron is not a stable particle, but proton, which is the lightest one of the heavy particles, that is stable for infinite time. But still, people have predicted, according to the grand unified theory, that proton will also decay, and its decay time is roughly, means lifetime, you can say. That lifetime of proton is, anyone know GUT, grand unified theory? किसी ने थोड़ा बहुत हल्का सा कभी देखा हो, कभी पढ़ा हो, और क्या है वो? What is grand unified theory? How many forces are being added in the grand unified theory? GUT कहते हैं उसको. So GUT में किनको ऐड कर दिया है? All three become same force. We only have 4. Weak, EM,
and strong. They become identical at certain energy scale or certain dimension. Certain dimension है, that is dimension is defined, which is around 10 to the power of minus 31 meters, जिसको हम normally Planck length से assign करते हैं. Exactly minus 34 नहीं है, ये 33 भी कई बार mentioned होगा किसी बुक में. माइनस अभी जो डिस्कवरी हो 33 के अराउंड है, जो प्लैंक्स को रीच कर रहा है, मींस h के डायमेंशन को रीच कर रहा है. So this is called as a Planck length. So if you are able to make an instrument which is able to measure this distance, this dimension, then you will able to see that they are not having any difference. You can see that. आपके पास यहाँ range था ना कहीं, range देख लो. Minus 18, minus 15. You have to go further, more deeper into the things. So this dimension is further more deeper into these two things. And that distance, you won't see any difference between these three interactions. They will be similar. Or if you call it in an energy scale, the energy scale will be 24 electron volt. This is the required energy scale. If you're able to reach this energy value, then also you won't be able to see the difference between. This is called as a grand unified theory. Still, we don't have gravitation in this picture. इस पिक्चर में gravitation कहीं पे आ नहीं रहा है. So gravitation के लिए, gravitation is different thing. That is why it is very difficult to put up in a one way कि gravitation को हम, अगर इसका graph भी देखोगे तो graph is very simple. If you see in terms of, let me just make it a graph also. This is in dimension, and this dimension is inverse actually. So 10 to the minus 31 meters. This is, and this particular point, if you call it in the energy scale, that is in 10 to the power of 24 electron volt. तो ये value और ये value, ये मीटर के सेंस में है और ये एनर्जी के सेंस में. और here the strength of the field, how the strength varies means this value. ये वाला पार्ट है ना, strength of these three forces, how they vary when you go in a certain distance, means up to this distance, up to 10 to the power of minus 18, everything is different. तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों का अपना एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है. ये 10 to the power 25 के ऑर्डर में है, ये 10 to the power 38 और 36 के ऑर्डर में, 10 to the power 38 और 40 के ऑर्डर में. So there is a difference between these three things up to this much of distance. But if you go further, if you go up to this much of a smaller scale, this is your strong force and that will hit here. This is your weak force that will hit here, and this is your electromagnetic force that will hit here. So everything will reach to the same point. All the strength, ये number अभी 10 to the power of कितना है, 40 के अराउंड है. ये नंबर अभी हमारा 10 to the power of 25 के अराउंड है. ये नंबर हमारा 10 to the power of 38 है. But it will start decreasing. The weak, strong forces will start become weak. They will start becoming weaker as you go in a lower dimension. This will also become weaker, and this will increase a little bit, and you will reach to a same point. And at this point, when you reach to this energy or this dimension, you don't see there is a strong force. Means gluon, photon, or W or Z boson, they all will be behaving in the same sense. You won't be able to distinguish between these three particles, these three different category of particles. They all will behave in a similar fashion. Okay, so this is your field particles, and what are the different classification, what are the parameters, वो सारा मैंने यहाँ पे टेबल में आपके डाल दिया है. Okay, एक थोड़ा सा और है, पता नहीं वो यूनिट में है या नहीं है. I will look into that. That is a Feynman diagram. Okay, so Feynman diagram is this is something which is an interaction. You can say not a field particle. You can say मैंने इसके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस नहीं किया exactly. इनकी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस नहीं की, बट हमने मैक्सिमम इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस की इस वाले टेबल में. दैट इज एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग द इंटरेक्शन, हाउ द इंटरेक्शन इज वेराइंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट रेंज, हाउ दे आर proportional to the distance, act upon what kind of particle and affect what kind of particle, and what is the range. We have actually discussed these things. We have not discussed the basic characteristic of these particle. वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फेनमैन डायग्राम. पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि आपके सिलेबस में फेनमैन डायग्राम है या नहीं है. Even though if it is not there, very
normal way of understanding about detailed Feynman diagram itself is a part of a field theory, तो हम उसको detail में नहीं जा रहे हैं. But all the interactions, these field interaction, जिसको हम field interaction कहते हैं, means they are exchanged by the field particle. This can be pictorially being represented by Feynman diagram. And for that discovery of this electrodynamics by the Feynman, and one more person or two along his group, they have got the Nobel Prize for that. So they have discovered the electrodynamics. Means maybe something like a weak field, and they have tried to do the they have tried to sum up the weak field and the electromagnetic. Strong को तो नहीं किया था उन्होंने, but weak और electromagnetic को they have tried to couple them. So there is no difference between these things. They have just proven that, and that is called electrodynamics. So what their thought was that if you say that everything is carried by the fields, and this field is being, means this field is not a continuous, it has a quantization, and if it has a quantization, it means everything is being which is being exchanged is a something like a photon, or you can say a quanta particles, or you can say field quanta particle. So if you're saying ki one electron is interacting with another electron and by throwing a virtual photon, वो virtual photon हमें measure नहीं होता है, हम measure नहीं करते हैं, we don't measure that virtual photon, but it is there. And what we can do the calculation for that. कि ये interaction अगर हम virtual photon के through हमारे पास अगर interaction मुझे लिखने के लिए बोला जाए कि एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो what I will write k q1 q2 upon r square, यही फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों के इंटरेक्शन का यही लिखोगे ना. अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात करूं तो यू वोंट राइट द फोटोन काइंड ऑफ थिंग देयर. कुछ ऐसा नहीं लिखोगे कि फोटोन भी आ गया, उसका भी कुछ मैं लिखता हूँ या ये लिखता हूँ वो लिखता हूँ. अब क्या लिखोगे? यू विल राइट ओनली द इंटरेक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है. बट इट इज नॉट गोइंग इन दैट वे. व्हाट इज हैपनिंग इफ इलेक्ट्रॉन इज देयर एंड इट ट्राई टू फील दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, तो नॉर्मल जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, वो इंटरेक्शन हमें बता देगा. बट इफ यू गो इन फील्ड अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास क्वांटा होते हैं, क्वांटा थ्रो करते हैं एक फोटोन और दूसरे फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास, इट इज सेंडिंग अ क्वांटा, एंड व्हेन द क्वांटा इज बीइंग फेल्ट बाय द अदर पार्टिकल, देन ओनली द इंटरेक्शन इज हैपनिंग. दिस इज द वे ऑफ डूइंग द इंटरेक्शन. सो व्हाट यू कैन थिंक दैट दिस नॉर्मली जो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं उस डायग्राम को मैं शो कर देता हूँ. This is normal in the space and time scale. So maybe repulsive force or maybe attractive force that we are not writing here, but what is being done here, that it is moving forward in the space and time, and at certain instant it emits a photon. ठीक है, एक फोटोन इसने एमिट किया है जिसको मैं h nu लिख सकते हैं. And this photon which is being emitted, that is being felt by this particular electron. This electron is not feeling directly this electron, but this electron is feeling a presence of this photon, means it is actually feeling the presence of electric field due to this particular photon. So what we have done, this has emitted a photon, and that photon electric field is being felt by this electron. This is very unique idea. इतना easy नहीं था इसको समझना. इसका डायग्राम भी बनाना मुश्किल है, मींस यू कैन मेक फॉर वन और टू थिंग्स, बट ऑल द इंटरेक्शन, एवरी इंटरेक्शन यू कैन इवन मेक फॉर बीटा डिके, यू कैन मेक फॉर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन डिके, electron and positron annihilation, means you can make for everything, you can make the Feynman diagram. These are called Feynman diagrams, and you are not restricted to generation of one photon. This is also a possibility that one electron can emit a photon, and if it is near to the atom, this can generate a electron and a positron, and there is a possibility that they can again annihilate and they can produce a photon. और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस सारे पार्टिकल को फील कर रहा है. इट इज ऑल्सो फीलिंग इंस्टेंटेनियसली फॉर सर्टेन टाइम. इट हैज फेल्ट दिस ऑल्सो, एंड सॉरी दिस इज वन इज माइनस और वन इज प्लस. सो प्लस एंड माइनस दोनों को, दोनों ही प्लस दिख रहे हैं मुझे, यहाँ मैं लगा देता हूँ, ये लो प्लस एंड माइनस.
So it is feeling the presence of this also, and if you are able to make, if you make more and more particle, more and more virtual particle, actually these are virtual particles. This is a real particle, this is a real particle. All these are virtual particle. So when you make a sea of virtual particle, the interaction formula, whatever the interaction you will get, that will be the most accurate. तो आज के टाइम में जो सबसे एक्यूरेट थ्योरी है जिसका एरर फैक्टर 10 to the power of -12 ऑर्डर में, means if you follow this theory, if you make more virtual particle, you will get better result for the interaction of these two particles. जो आंसर यहां से मिलेगा उससे ज्यादा बेटर मिलेगा, और आपका जो एरर होगा वो -12 के ऑर्डर में होगा. मींस एरर फैक्टर विल बी एट दैट पॉइंट, यानी 0.0000 समथिंग एरर विल बी समवेयर देयर. So this is the most, till date it is the most accurate theory in the physics, you can say. अगर कोई पूछता है सबसे accurate theory क्या है जिसका result सबसे accurate आता है, that is electrodynamics. अब तो quantum chromodynamics आ गया, which is concerned with the quark. तो color charge के base पे भी ये सारा कुछ आ गया, but it is the most accurate. Means there is no restriction of making how many virtual particle you make. You make millions of virtual particle, and they all are interacting with this particular electron. So this is generating so many virtual particle, and all are doing interaction with this one, and that is the net interaction between these two. तो फेनमैन डायग्राम पे मैं उतना डिटेल नहीं जाएंगे. एक और एग्जांपल मैं बस दे देता हूँ. ये तो हमारे दोनों ही हमारे पास रियल पार्टिकल है. इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो दे आर रियल पार्टिकल. इफ यू हैव अ एंटी पार्टिकल, देन हाउ यू मेक द दिस फेनमैन डायग्राम. तो एंटी पार्टिकल के थोड़ा सा डिफरेंस है. बाकी नॉर्मल पार्टिकल को तो हमेशा स्पेस एंड टाइम में फॉरवर्ड स्केल में ही दिखाते हैं, बट एंटी पार्टिकल को वी ऑलवेज शो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो जस्ट आई विल मेक वन एग्जांपल, द एनिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. So if this is space and this is a time scale, and if there is an interaction, means the electron and a positron, and they get annihilated and they generate a photon. So photon is real, you can say. This photon which is generated is real, so it is moving forward in time. This electron is also real, it is moving forward in time. But always when you have the anti-particle, you always make in a backward of time scale. This is a rule actually. This rule you have to follow. तो जब भी आपके पास एंटी पार्टिकल होगा तो हमेशा उसे आप टाइम स्केल में बैकवर्ड में दिखाओगे. इट विल नॉट मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऑल्दो they both are moving towards each other, and they came to here and they do the annihilation and they generated a photon, but in the diagram you will always show that is moving in a backward direction. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है. So whenever there is anti particle, अगर कोई प्रोटॉन का भी इंटरेक्शन है, एंटी प्रोटॉन का इंटरेक्शन है, तो प्रोटॉन will always move in a forward in time scale, but anti proton will move backward in the time scale. तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है. तो अगर कल को एग्जाम में आता है कि एक ये बना हुआ है डायग्राम और एक ये बना हुआ है डायग्राम प्लस, एंड यू आर आस्क्ड व्हिच वन इज करेक्ट, space and this is time. So which one is correct? You obviously you will say this is wrong. They cannot move in a forward direction. This has to move in a backward direction. Okay. So इसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, but there are so many. You can see the diagram. Feynman diagram Google पे टाइप करना और देखना different interaction के diagram आप you can see the diagram. तो इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं. You can even check the diagrams in the this crane also. Crane में भी the first and second page में it is given there, but it is not possible to go on detail with this one. So what the field, so the first classification, ऊपर तो हमने interaction के बारे में classify किया था. Interactions, their range, their strength, their proportionality on R, how they act on which kind of particle, and what are the affected particle that we have discussed. And these are the field quanta which carry these particular interaction. So now we will discuss the some of the properties of these field particle. So the first is field particle. तो पहला classification आपका क्या है particles का? They are field particles. मैंने स्टार्टिंग में कितने बोले थे? 4 बोले थे. तो 4 में से फर्स्ट कैटेगरी इज द फील्ड पार्टिकल which carry the field. They don't make the matter, but they carry the field. Second category is leptons. Leptons are lightest particle. Then the third category and the fourth category, actually they are subcategory of a bigger set which is called as
हाइड्रॉन्स। तो हाइड्रॉन के ही दो कैटेगरी हम डिवाइड कर देते हैं नॉर्मली, एक को हम कहते हैं मेसॉन्स और दूसरे को कहते हैं baryons. So mesons and baryons. So they both are come into the class of hadron. So basically you can say कि there are three different kind of जो broader you can say कि three different kind of, एक field particle है, leptons है and hadrons. लेप्टॉन में कोई और फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, फील्ड में कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, बट हाइड्रोन में देयर इज अ क्लासिफिकेशन इन टू डिफरेंट फर्दर मोर टू डिफरेंट वे। वन इज और कॉल्ड एज मेसॉन्स, जिसमें पाई आ गया, बहुत सारे मेसॉन्स है, वी विल सी के मेसॉन्स है, बी मेसॉन्स है, देयर आर सो मेनी मेसॉन्स, डब्ल्यू मेसॉन्स है, ईटा मेसॉन्स है, तो देयर आर सो मेनी मेसॉन्स। एंड अनदर क्लास इज द दिस बेरियंस। तो मेसॉन्स और बेरियंस दोनों हाइड्रॉन्स में ही आते हैं, बट हाइड्रॉन को हम दो डिफरेंट पार्ट में आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सो वी हैव फोर डिफरेंट, तो बेसिक अगर देखोगे तो वी हैव फोर डिफरेंट, फील्ड पार्टिकल, लेप्टॉन्स, मेसॉन्स एंड बेरियंस। फील्ड पार्टिकल, लेप्टॉन्स, mesons and baryons. Mesons and baryons are subset of a hadron. ठीक है, तो फील्ड पार्टिकल में वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ मेनी फील्ड पार्टिकल वी हैव gamma which is photon, we have W plus minus, we have Z which is 0, and we have gluons, and there are 8 category, and this is 2, this is 1, and there are several you can say depending on the lambda, and there is fourth is gravitron, this is I, ठीक है, this is a gravitrons. So their mass and their charge, their spin and their range. रेंज तो ऊपर वाले आप कॉपी कर सकते हो जो ऊपर लिखा था, बट यू कैन राइट हियर आल्सो इफ द क्वेश्चंस कम कि भाई फील्ड पार्टिकल कितने होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की हैं, तो दीज आर द फोर प्रॉपर्टी यू कैन राइट टू देम। दिस इज जीरो रेस्ट मास, यहाँ पे जो मास है दैट इज रेस्ट मास इज जीरो। Gravitons also have rest mass zero, gluons also have rest mass zero, and these two they are not zero, they are 81 mega, sorry not mega, giga electron volt, and per c square अगर मास के सेंस में आपने कहा है तो this is this much and this is 93 giga electron. What is the mass of proton? What is the mass of proton? 918. 918 what? 918 तो नहीं, 938 है, 938 है ना, Yes sir, 938. 938 के यूनिट क्या है उसका? MeV by c square. MeV means roughly you can say 1 giga. What you can say? You can say 1 giga. This is 81 giga. It is 100 times the mass of proton. Means proton is generating a particle which is 100 times heavier than its own mass. है या नहीं? W boson, Z boson, बीटा डीके में इन्वॉल्व है। बीटा डीके कौन करता है? आपका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर बीटा डीके कर रहे हैं, it means they have generated this particle. They have generated a mass which is 100 times of its own mass. How can this be? Okay, let us come to the charge. Zero charge होता है, photon का charge नहीं होता है. Gluons also have no charge. Graviton also have no charge. This have already a charge, plus minus है. Means plus one and minus दोनों charge possible है. This is zero. Then this is plus minus one actually. Plus minus मैंने लिखा है. Plus minus one you can say. Then spin. Spin is one. They both have one and one. And this is also one. All are one. So they are boson. What about gravitons? What is the spin of graviton? No one, two.
This is very unique thing. How this can be possible? This is very means as per theoretical understanding, they said it must be two. And what is the meaning of this? You know the meaning of spin half. Spin half का मैंने कभी आपको क्लास में मीनिंग समझाया होगा कि when it do a rotation double time, then it is being doing a complete rotation. Means what you see a phase of a, if electron is a spin half particle, it means if it rotate two times, then you see the same face of the electron, whatever the face you are looking at. So उसको two rotation complete करने पड़ते हैं, then you say कि the same electron is there. अगर वो 360 degree rotate कर रहा है, this is just analogous, you can understand in that way, that if electron is rotating 360 degree, you don't see that electron is appearing as a same. Normally ऐसा तो होता नहीं, कोई भी फुटबॉल ले लो या कोई भी सर्कल ले लो, तो सर्कल को आप 360 रोटेट करोगे, you will see the same face. But when you have a spin half particle, you have to rotate two times, then you are able to see the things similar to the first which you have seen. That means 360 plus 360 720 times वो rotate करेगा, means 720 का एंगल बनेगा, तब जाके वो सेम पिक्चर में व्यू होगा कि इलेक्ट्रॉन, yes, electron has reappeared. When it is 2, it means it is going to do half. When it do a half rotation, you will see the face. So it is something like that. So spin 2 is very unique number. Still, that is why it is very difficult to discover. Range you can write easily. This is of infinite range, and this kiska tha infinite? Gravity. So this is also infinite, and this you can write 10 to the power of minus 18, and this is 10 to the power of minus 15. Okay, so range, this is actually the first class of particles. तो पार्टिकल क्लासिफिकेशन में आपका फर्स्ट जो क्लास है, दैट इज फील्ड पार्टिकल्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द फील्ड. तो नेचर में ज्यादा नहीं है, यू कैन इजिली काउंट देम, फोटॉन एंड 3 हियर, 8 हियर एंड 1 इज हियर, सो दे आर वेरी लेस. तो नेचर में जो फील्ड कैरी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, दे आर नॉट वेरी large number, they are very small. Okay, so something about these parameter, and this is one big problem, that how this mass can be generated by a proton or a neutron which is of 1 giga electron volt mass. वो अपने आप ही 1 है और 100 के टाइम्स का जनरेट कर. तो ऑब्वियसली दैट इज अगेन इट इज अलाउड, इस तरह के वायलेशन अलाउड है. पहले भी मैंने आपको बताया, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी गिव यू टू डू द वायलेशन. तो वायलेशन अलाउड है, कानून को तोड़ना अलाउड है, जब तक कोई आपको पकड़ ना ले. दिस इज व्हाट लाइन इज फेमस इन इंडिया. बाहर तो नहीं है, बट इंडिया में फेमस है. यू कैन ब्रेक द रूल्स until you are getting caught by someone. तो नेचर भी अलाउ करता है, you can break the rules, that is allowed. You can generate this much of mass, there is no restriction on you. But when you generate this much of mass, that mass will be for a very very short time. You can borrow the money, something like that. You can borrow the money. If you borrow more money, you have to return in a lesser time. If you borrow less money, you can return in a longer time. So nature आपको इस चीज के अलाउ करता है. You can generate these masses, there is no restriction. Vacuum से आप generate कर सकते हो, but you have to return it back. आपको for certain time, जो time आपको उस uncertainty calculation से delta E, delta T must be greater than or equal to h bar. If that is valid, then you can do that. But इक्वालिटी में एच बार लिख लो, तो इक्वालिटी में एच बार लिखोगे, यू कैन इजीली कैलकुलेट कि डेल्टा टी मुझे अलाउड टाइम क्या है अगर मैं इतने बड़े मास को डिमांड कर रहा हूँ वैक्यूम से. वैक्यूम आपको मास दे देगा, बट इट विल आल्सो से कि आफ्टर दिस मच ऑफ टाइम यू हैव टू रिटर्न इट बैक. ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू सम मोर idea about these two forces. They have been unified at some extent, that they are not different things, they are similar kind of thing. And to do a GUT, means grand unified theory, you can add this also, but you need very high scale of energy. This can be done in normal accelerator. हमारे पास जो accelerator available है ना, उसमें ये possibility है कि इन तीनों का कोई एक same, they don't have any difference, means photon and these photon behave in a similar way.
So we will see in the next word file that when they have discovered and how they have discovered, and do we have really measured them, or just we are saying कि ये होते हैं होते हैं होते हैं. We don't know anything about that, but we will see कि क्या measure भी हुए हैं या कैसे भी measure हुए हैं. Whatever the way we have measured these particles, that we will discuss in the next word file. So let me share that word file. Okay, so at high energies, roughly that energy is around 10 to the power of 100 giga, I think. That energy is 10 to 100 giga means around 10 to about 12, you can say. So at the energy scale of 10 to the power of, you can say 12 हो गया ना, तो 12 electron volt means roughly you can say more than 100 giga electron volt. बिकॉज आपके जो पार्टिकल जनरेट होने हैं वो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के चाहिए आपको पार्टिकल 98 90 81 और क्या था 93. So that is around 100. So at least you should have at this particular scale. हमारे पास इस स्केल के रिएक्टर हैं आज के टाइम तक, पहले नहीं थे, बट नाउ वी हैव दिस काइंड ऑफ रिएक्टर. वी हैव मोर देन दिस आल्सो. वी हैव रीच्ड अराउंड 10 to the power of 16, आई गेस. I exactly don't remember, but we have reached to this energy scale. मैंने कहीं एमएसटी में भी आपको ये वैल्यू दी होगी, कभी मैंने पोस्ट में लिखा होगा कि वी हैव रीच्ड टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू टिल डेट. ठीक है, तो इससे ज्यादा हम नहीं रीच कर पाए. एंड आवर एम इज टू गो टू 10 to the power of 18 at present, but until and unless we reach to this value, we don't find any new thing. तो पार्टिकल फिजिक्स में अभी थोड़ा सैचुरेशन आ गया है. इसके और इस रेंज के बीच में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा. मिल सकता है, वी डोंट सी दैट, कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एज पर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस स्केल टू दिस स्केल यू डोंट फाइंड एनी न्यू पार्टिकल. तो इसीलिए थोड़ा सा इस पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम हो गई है, बिकॉज थ्योरेटिकली नॉलेज वी हैव कि भाई इस स्केल तक तो हम पहुंच गए हैं, अगला हमारा रीच यहाँ पे है, यहाँ जाना ज्यादा मुश्किल है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो हियर. बट क्या हम 18 या 20 या 21 रखें तो क्या कुछ काम बनेगा? तो बट थ्योरेटिकली देयर इज नो यूज. पीपल हैव सेड दिस. जब तक आप ये नहीं रीच कर लेते यू वोंट बी सी एनी, यू वोंट बी एबल टू फाइंड एनी न्यू, कोई डिस्कवरी नहीं होगी. न्यू पार्टिकल की डिस्कवरी जितनी होनी थी हो गई है. इफ यू वांट टू गो फॉर द फर्दर, you have to go to this scale. Then only you will able to see further more new particles, if it is possible. Means even people are so means you can say optimistic that even electron is having a structure. Electron, at least at present when we are studying this particular course, electron is elementary particle, elementary point particle, exactly point. It doesn't have any x, y, z axis. x का कोई इसका डायमेंशन नहीं है, y में कोई डायमेंशन नहीं, z में कोई डायमेंशन, even though that is spinning. So there is no dimension. So that is exactly a point particle. There is no structure of an electron. Internally there is no structure. But still people are optimistic कि भाई हमें जब इस एनर्जी स्केल पे पहुंचेंगे ना तो शायद हमें इलेक्ट्रॉन का भी स्ट्रक्चर मेजर हो जाएगा. And we will able to see that electron is not a elementary particle. Optimistic, eh? Maybe reality ऐसा ना हो. Maybe that may be the ultimate point particle. And they also say कि quark is also a composite particle. What they are thinking of. तो उनकी optimistic बनी रहे, so that they will do the research. They will try to make the accelerator of this much energy. तो जब तक ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे तब तक वो बनाएंगे नहीं, और जब बनाएंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि है कि नहीं है. वी डोंट नो, बट स्टिल दे आर ऑप्टिमिस्टिक दैट इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अ composite particle and quark is also a composite particle. But at present it is established that electron is a point particle and quark is also a point particle, or you can say elementary particle. They don't have any dimension. So if you reach to this scale, then only you will able to see this W and Z boson. So that was done in 1983. So they have seen this at 1983. I think that was proton and
anti-proton collider. They have made this proton and anti-proton collider, and by a reaction in which this W plus minus can give rise to this electron and positron plus a neutrino. Similarly, Z boson will give me a plus and a electron. So they are able to measure these particles, and they are not generated by photon. They are not generated by photons. So they are able to measure these particles, and they infer that yes, these two are existing, and they are existing for certain time when they have done the measurement, and that was existing because they have reached to this particular energy scale using this proton collider. So what the energy they have used? I think they have used 270 giga electron volt this particle, 270 giga electron volt this particle, so they become 540 giga electron volt in the center of mass frame. So they are moving in opposite way. यहाँ से प्रोटॉन आ रहा है of this much of energy, यहाँ से एंटी प्रोटॉन आ रहा है of this much energy. जब ये जहाँ पे जब bombardment होगा तो at for a certain time the energy will be 540 giga electron volt. In this 540 there is a fair possibility of formation of these W and Z boson. So you can make several. 540 तो बहुत ज्यादा है, हमें चाहिए सिर्फ 81 या 93 giga electron volts. That is more than enough. So this energy is more than enough, and they were able to predict these particles. They were able to measure this particle not directly, but by these two reactions. So this is means you can say first time they have discovered these particle. Experimentally they have done this, and they got the Nobel Prize for this one after the discovery. Winberg and Salam, Abdul Salam था, क्या नाम था उसका? मेरे ख्याल से अब्दुल सलाम था. Yes, Winberg and Abdul Salam, they have given the Nobel Prize for discovery of these two particles. That three particle actually, W के दो हैं और Z का एक है. Z zero वाला है, W plus minus है. But at further more energy scale, means if you talk about this energy scale, then this gamma and W plus minus and Z, they become similar. You don't able to distinguish between them. There is no big difference between these particles. So at certain, if you go further more energy scale, that these particles are actually they can be called as a single photon, single kind of photon, and that photon is called as something like an electro weak photon. उसका नया नाम था electro weak, related with electric field and also related to the weak interaction. So at some energy scale, we can club them, and that is a electro weak force. Electro weak force higher energy scale pe hai, but when you go in the lower energy scale, means when you back to the giga electron volt or mega electron volt, then they are separated. They are different things. Photon is a different thing, and these two are different thing. So you can say अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाऊं या नहीं समझाऊं, छोड़ो इस चीज को, कोई क्वेश्चन में आता नहीं है. बट how the people have means how they have understood this in the way that plus 0 and minus, and there is one 0. So there is a triplet become W and Z, and singlet become a photon. तो ये थोड़ा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये आपके सिर्फ एक एनालिसिस के लिए कि this particle which is called as electro weak photon, that can exist into two parts. एक उसका ट्रिपलेट स्टेट फॉर्मेशन होता है, एक उसका सिंगलेट स्टेट फॉर्मेशन. सिंगलेट स्टेट आपका गामा फोटोन बनता है, जो ट्रिपलेट स्टेट है वो आपका एट लोअर एनर्जी स्केल इट बिकम W and Z बोसॉन. तो इसको हम यहीं एंड करते हैं. नाउ वी कम टू द second kind of category of particle, which is actually the this electrons. तो ग्लूऑन्स भी हमने बहुत सारा डिस्कस नहीं किया अभी. ग्लूऑन्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बिकॉज जो इंट्रैक्शन आपका स्टार्टिंग में मैंने लिखा था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक, दे आर ट्रूली एलिमेंट्री इंट्रैक्शन यू कैन से. और जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, इन प्रीवियसली इट वाज थॉट इन टर्म्स ऑफ मेसॉन्स, बट दैट वाज नॉट एलिमेंट्री इंट्रैक्शन. But if it is in thought, if it is being understood in the terms of gluons and quark, then it is a elementary interaction. तो अगर आपको कोई कहता है कि एक प्रोटॉन है और एक दूसरा प्रोटॉन है, they are interacting through a pions, and this is a strong interaction. Does this interaction is a elementary strong interaction or not? So you can easily say this is not elementary strong interaction.
A proton and proton interaction is not it is a strong interaction, but it is not elementary strong interaction. Elementary strong interaction कब होगा? When you have quark, gluon and quark. तो थोड़ा सा डिफरेंस करना, अगर कभी कहीं इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, कई बार होता है ना, जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पे थोड़ा सा एक ऐसा होता है कि बच्चे ने कितना डिफरेंस पढ़ा है, कि भाई एक एलिमेंट्री इंटरेक्शन और एक नॉन एलिमेंट्री इंटरेक्शन का फर्क इसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या जिसने भी पढ़ा है, हो सकता है 10 ही बच्चे हो, बाकी बच्चे तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उनको तो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है. सो दे आर मोर इंटेलिजेंट. बस, बट दिस कुड बी अ क्वेश्चन इफ यू गो इन अ टिफर, तो टिफर में पूछा जा सकता है. इफ आई से यू that proton is passing or throwing a meson to another proton, does this is a strong interaction? You will say yes, this is a strong interaction, but it is not a elementary or fundamentally strong interaction. The fundamental strong interaction will be a between a quark and gluon, between two quarks through a gluons. तो टीचर आपका अगला सवाल पूछेगा ही नहीं पार्टिकल फिजिक्स से, बोलेगा भैया इसको पता है, आगे बढ़ते हैं. आप जब यहाँ पे क्लियर कर दोगे ना, आपका इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा, वो समझ जाएगा कि इसने पढ़ लिया है. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप किस इंटरेक्शन को फंडामेंटल कहते हो, किसको नहीं कहते हो. बट व्हेनेवर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज सेड, इट इज ऑलवेज अ फोटोन. फोटोन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, फोटोन इज फोटोन. So that is a truly elementary interaction. And when you say a beta decay is also a truly elementary interaction. Means उसका और कोई further, क्योंकि beta decay आपका हो रहा है, और बीटा डीके में जब W बोसोन और Z बोसोन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सो दैट इज आल्सो फंडामेंटल इंटरेक्शन. बट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए दो डिफरेंट पिक्चर हम बना देते हैं. एक पिक्चर हम पायन्स के साथ बनाते हैं, विच इज नॉट अ फंडामेंटल, बट जब हम ग्लूऑन के साथ बनाते हैं तो दैट इज अ फंडामेंटल. सो नाउ वी कम टू द सेकेंड क्लास ऑफ पार्टिकल्स. पहला पार्टिकल, पहले सेट ऑफ पार्टिकल क्या थे? फील्ड पार्टिकल. दे एक्चुअली कैरी द फील्ड. अब जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली द फर्मियंस व्हिच मेक मैटर्स. So let me just should we start? 2:18 हो गया है. यहाँ पे हैं वो बच्चे जो जिनको वाइवा देना है या जिनको प्रेजेंटेशन देना है? आर दे हियर? अगर नहीं है तो हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं. ओके, योगेश इज देयर. एनीवन एल्स? क्या रोल नंबर है? रोल नंबर मुझे चेक करना पड़ेगा. क्या क्या रोल नंबर मैंने दिया था? लेट मी जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट. मैं एक बार चेक करता हूँ रोल नंबर, फिर रोल नंबर अनाउंस करता हूँ. इफ दे आर हियर, अगर एक ही स्टूडेंट है तो वी हैव ओनली 15 मिनट्स, हम थोड़ी देर बाद दे देंगे. लेप्टॉन्स हम खत्म कर लेंगे उसके बाद. अदरवाइज अगर तीनों हैं तो व्हेन वी शुड स्टॉप एंड वी विल स्टार्ट द लेप्टॉन इन द नेक्स्ट क्लास. लेट मी जस्ट चेक द दैट शीट जो मैंने आपको शेयर किया था. ठीक है. So today we have 18 ना. 18 का है मेरे ख्याल से. रोल नंबर इज 7619 20 and 21. 19 और 21. वो 21 भी तो है. अजय 7621. He might be having lunch. हाँ? अजय इज देयर, उसको जरा रिमाइंड कर दो. और 19 सुदर्शन, वो नहीं है, he is not there. So 2 students we have. तो चलो हमारे पास है टाइम अभी. नेक्स्ट वीक भी है तो अक्टूबर में खत्म हो ही जाएगा. लेप्टॉन हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लेप्टॉन के बाद हमारा मीजॉन से वी विल डिस्कस लेप्टॉन एंड मीजॉन. सो योगेश,
एक बार जरा 7621 को कॉल कर दो, उसको भी बोलो कि, क्योंकि आप 10 मिनट से ज्यादा टाइम ही लेते हो वाइवा में, तो योगेश आई एम मेकिंग यू अ प्रेजेंटर, एंड अजय, अजय को भी मैंने बना दिया है presenter. So you can start with your presentation. योगेश आप स्टार्ट कर सकते हो, और जरा कोई भी बच्चा अजय 7621 को कॉल कर दो, बोलो कि ऑन होल्ड पे ना रहें और कह दिया सर, प्रेजेंटेशन। कह दिया। अच्छा कह दिया, ठीक है। चलो योगेश आप स्टार्ट करो, एंड लेट अस सी 10 से 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट आधा घंटे लग जाएंगे आपको, आधा घंटा नहीं तो 25 मिनट तो लग ही जाता है। चलो स्टार्ट करो, आई विल आस्क द क्वेश्चंस आल्सो, यू हैव टॉपिक व्हिच इज सिंक्रोट्रॉन एंड अजय का है इन इंडिया एक्सीलरेटर फैसिलिटी। ओके, सुदर्शन है, सुदर्शन का कोई किसी के पास नंबर है? Sir, my screen is visible. Yes, your screen is visible, you can start. हेलो Okay, sir.